questions, or then we will start the naming of benzene rings. That is also important. Okay. So write the question. Write IUPAC name or following. Let's start with two very typical type of questions. Carboxylic acid here, OH is here, Br is here, and one with a ring in which we have NO2 here, we have OH here, and we have Cl here. Okay. So you try to name these two compounds, then you will start the lecture. Now, Akif, if you're not able to name these structures, I would suggest, if you don't know idea what to do, I would suggest that you please go and watch the previous lectures. Okay, rather than attending this class, you should watch the previous lectures and then come in the next class. Okay, next class में जब आप आइएगा, I think you will be able to understand few things, because वहाँ पे the nomenclature part will be over. We will be studying some different things. लेकिन फिर भी हम बोलेंगे please watch all the lectures that we have not done till now. उसके बाद ही आइए. Otherwise, जैसा कि आपको लग रहा है, you don't know what to do, right? Or if you know what to do, you can please proceed. But if you don't know what to do, IUPAC. what? Sorry, you know what is your IUPAC? I know the names, like how to write. अच्छा, you know how to write. ठीक है, please. Yeah. Okay then. I'm giving you guys 5 minutes, and you will send me whatever you have done in those 5 minutes.
2 minutes and 30 seconds remaining. One minute more. Guys, if you are stuck somewhere, you can ask me. Thirty seconds more. Okay, guys, please send your answers, whatever you have done, quickly. Also, guys, can you please start your cameras on? Amna, Akib, Rishita, Izan, and Kodeja. Send me whatever you have done till now quickly. Akib, Rishita, and Amna, Izan, and Kodeja. No, it's not right, Akib. It's not right. Oh. Rishita, you have done one. Okay, fine. Okay, fine, Rishita. Amna, I'm waiting for you, Amna. It's taking too much time. Amna, 1 minute, sir. 1 minute नहीं, 1 minute नहीं है टाइम. जल्दी भेजिए आप. Just send it. हाँ, हाँ ठीक है. आप भेजिए, आप लिखना नहीं है और कुछ. Send to me, then I will start discussing. Okay. Also, again, Isa and Khodeja, send me whatever you have done. Yes, Amna received yours. Oh, नहीं. आमना थोड़ा सा आपने ब्लंडर टाइप कर दिया है.
चलिए, see here, Amna, you will tell Amna, Rishita, and Akib. Guys, can you please have your mic on? Those who have sent the answers actually. Okay, I have received one more answer or what? अच्छा, आपने दोनों किया है. Okay, fine, Amna. Okay, पहले वाला देखते हैं, उसके बाद Amna, I will look at the second one. Okay, what is the functional group, Amna? What is the functional group? OH. But there is COOH also, ना? So COH की जो priority होती है, that is greater than, it lies above OH, right? भूल गए आप? You remember now? Yes, sir. तो ये oic acid होगा ना? COOH is the functional group, right? The functional group is going to be COOH, and उसके लिए we will write oic acid. ठीक है? Unsaturation आपने सही लिखा है, that is there is no double bond or triple bond, that is why we are going to write AN. After that, the parent carbon chain. So we'll start from the carbon atom, which is part of carboxylic acid, 1 carbon, 2 carbon, 3, 4, and 5. So we can start numbering also. So number will be 1 carbon here, 2 carbon, 3, 4, and 5 carbon atoms. So for 5 carbon atoms, we write pent. Now we will talk about the substituents. So what are the substituents? We have a bromo substituent here, bromo, and this OH will be hydroxy. Okay. So bromo is in the third place. So we will write 3 bromo. And the other substituent is 4 hydroxy. Now when we write the substituent, Rishita, आपसे यहाँ पे mistake हुई है. When we write the substituent, Rishita, first of all, we are going to write the substituent in alphabetical order, ना? Yes, sir. So hydroxy आएगा पहले या bromo आएगा? Bromo आएगा. Bromo आएगा, right? So 3 bromo. Then you have, sorry. Now again 4 hydroxy. Then pent, ane, and then 1 oic acid, है ना? अब देखिए पेंट एन में आपको डैश देने की जरूरत नहीं है ना रिशिता? Yes, sir. ठीक है, उसको याद रखिए, अदरवाइज वो मार्क्स कट जाएंगे वहां पे. बिकॉज़ सी आई हैव रिटन. ओके, ये मेरा ठीक है. Yes, sir. The rules we wrote numbers and letters are separated by dash. Numbers are separated by comma, and letters are written together. Letters are not separated, right? Are written together. ठीक है? Yes, sir. Okay. चलिए, मैं looking at your second answer. आपने दूसरा आंसर भी भेजा हुआ था. So let me see what was that. उसमें क्या गलतियां नहीं है. फंक्शनल ग्रुप सही है, साइक्लिक सही है, क्लोरोनाइट्रो, हाँ ठीक है, जहां तक आपने किया वहां तक सही है. नंबरिंग आपने नहीं की है, वो हम आपके लिए कर देते हैं. हाँ, व्हाटएवर यू हैव डन दैट इज करेक्ट. सो फंक्शनल ग्रुप इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी OH. व्हाट आमना? Time was over, so हाँ नहीं हम समझ गए. नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है. अनसैचुरेशन इज नथिंग, दैट इज व्हाई इट विल बी AN. Parent carbon chain, obviously it will be 6 ring of 6 carbon, that is why it will be cyclohex. And at last we have the substituents, right? So now we have already identified my functional group. I am done with the identification of parent chain and unsaturation. So this is my parent chain. Now what are the remaining यहाँ पे? So the remaining things are NO2. So NO2 is nitro, and Cl it is chloro. Now where will we start numbering from? So obviously we are going to start numbering from from the functional group. So this functional group will get the number 1. अब second number कौन मिलेगा? So I can go up and I can go below also, ना? Towards chlorine or nitro. तो nitro और chlorine में पहले कौन आ रहा है? Like which is nearer? Nitro और chloro? नहीं, nitro is near, ना? Yes, sir. Nitro. है ना? पहले वो देखेंगे कौन नजदीक है. अब दोनों अगर सिमिलरली नजदीक रहते, है ना, तब फिर अल्फाबेटिकल देखते ना. Then we would have seen alphabetical. So nitro. So 1, 2, 3, 4, and 5. So we will write this is 2 nitro है, and we have 5 chloro. So when we are going to write the name, we'll start with chloro because alphabetical order. It will be 5 chloro, 2 nitro, cyclohexane,
1 all. Chaliye, please write this down. Let me know once you're done. So can you give an example where there's double bond? हाँ, sure. वो भी कर लेते हैं एक बार. अच्छा, एक और इसमें एक एडिशन कर लीजिए. यहाँ पे भी आपके पास बी आर है. यू हैव 2 बी आर एंड यहाँ पे आपके पास एक CH3 ग्रुप है. ठीक है, इसमें एक दो चीज और आपका नहीं आता होगा तो क्लियर हो जाएगा. ट्राई दिस वन. आके आई थिंक आपने इससे पहली क्लास अटेंड की है ना, फंक्शनल ग्रुप वाली. Yes, sir. So जैसे आप फंक्शनल ग्रुप लेके बस आप रुक जा रहे हैं. If you get stuck somewhere ना कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, then please let me know. Okay, I will help you. So there are two bromine atoms. So how will we write that? Dibromo. Yeah, but they are not connected to the same carbon atom. So we do we write 5 and 4 together? I mean, like
different We numbers? have to write two numbers, right? So the numbers are separated by. Okay. Got it? By yes, comma है ना? ठीक है. yes, sir. Okay, guys, take just one more minute. No, Amna, your numbering is wrong. Rishita, send your answer. Rishita, 1 minute is over. Achha, you have sent, I think. Yes, sir. ओके. ओ मिथॉक्सी कैसे हो जाएगा यार रशिता? मिथॉक्सी क्यों होगा वहां पे? 3 तक ठीक है. Yes, that's अनसैचुरेशन हाँ, ईएन को भी नंबर करना रहता है ना. यू हैव टू नंबर द ईएन आल्सो. ठीक है, नहीं सही है गाइस, आप लोग प्लीज थोड़ा प्रैक्टिस करें, है ना. थोड़ी थोड़ी सी चीज आप लोग की हमेशा गलत हो जा रही है. OH है, दैट मींस इट विल बी ऑल. सो दिस इज योर ऑल. Then the unsaturation, so we have a double bond. So double bond is represented by En. And then we have the parent carbon chain. So parent carbon chain, it should contain this one. Simple parent carbon chain में बहुत ज़्यादा difficulty नहीं हुई होगी. Now, when we have to number it, we will start numbering from the carbon which is nearest to the what? Nearest to the amna बताए amna. We start numbering from that terminal which is nearest to. Functional group. तो बताइए, where should I start? A terminal या B terminal? B. आपको गलती समझ में आई? Yes, sir. कि फिर कैसे गलती कम कैसे होगी भाई? समझ में तो आ रही है आपको गलती? 6 कार्बन एटम्स, राइट. सो एक तो यहाँ पे 6 आपने पेंट लिखा हुआ है, 6 कार्बन लिख के भी आपने पेंट लिखा हुआ है रिश्ता. ऐसे कैसे चलेगा काम? हाँ, यू हैव काउंटेड 6 कार्बन, उसके बाद भी आपने पेंट लिख दिया है. ठीक है. सब्स्टिट्यूएंट, व्हाट डू वी हैव सब्स्टिट्यूएंट? वी हैव ब्रोमीन एज सब्स्टिट्यूएंट. वी हैव ब्रोमीन. दिस इज ब्रोमो and this is also bromo and this is methyl. So here we are having in the 4th carbon and 5th carbon, so we have 4,5 dibromo, and we have what? We have 3 methyl. And if I talk about double bond is in the 5th, 6th carbon. That means we'll write 5-ene. Now Br and M, so bromo comes first, so we'll write 4,5 dibromo 3-methyl, then we'll write hex 5-ene
and so it's 2 all. So this will be the name. Please write this down. यार ऐसे मिस्टेक होता रहेगा तो कैसे चलेगा? चलिए सर, अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अब हो गई IUPAC नेमिंग यहाँ पे, अब आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है बस, ठीक है? नाउ यू राइट द टॉपिक नेमिंग ऑफ benzene and its derivative. ठीक है? So when we have this fragment, a 6 carbon ring with alternate double and triple bond, sorry alternate double and single bond, है ना? डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, ऐसा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज, दिस इज बेंजीन, दिस इज बेंजीन। और बेंजीन के ऊपर जब कुछ सब्स्टिट्यूएंट या फिर कोई भी चीज लगता है तो उसको बेंजीन डेरिवेटिव बोलते हैं। इन बेंजीन डेरिवेटिव यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, इफ एनीथिंग इज एडेड ऑन बेंजीन देन उसका पफ जो होगा ना, द नेमिंग कन्वेंशन दैट वी आर फॉलोइंग इज एस पफ, तो उसका जो पफ हो जाएगा दैट पफ इज सिंपली बेंजीन, and anything which is added, which is present in the, anything which is present in the benzene ring, it is going to act as a substituent. So we'll write first point, when benzene is present in an organic compound, in an organic compound, right, then end the name with benzene. ठीक है? With benzene, that means that is puff will be equal to benzene. Puff is equal to benzene. You write next point. Any other group attached on benzene acts as a substituent. Raise your hand once you're done writing. Waiting for Rishita, Amna, Mizan and Khadija. Let me know if you have not done. See, there is a question in your NCERT textbook. उसको पहले deal कर लेते हैं. So you have 1, 2, 3 carbon atoms. ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो बताइए पफ क्या हो जाएगा? पफ विल बी बेंजीन। दैट मींस वी आर डन विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, इतना हमने आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ व्हाट रिमेन्स हियर? नाउ व्हाट रिमेन्स? दिस पार्ट रिमेन्स, राइट? आपके पास एक पार्ट रिमेनिंग है जो कि क्या है? दिस थिंग। तो यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स है, राइट? सो व्हाट विल बी द सब्स्टिट्यूएंट? टेल मी। सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा? 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं?
बोले prop प्रॉप, और सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट है तो propyl प्रोपाइल, बस हो गया, नाम हो गया प्रोपाइल बेंजीन। कुछ और यहाँ पे तो है नहीं, तो स्टार्ट नंबरिंग विद द सब्स्टिट्यूएंट, तो ये 1 नंबर और 1 नंबर कभी दे भी सकते हैं, आप नहीं भी देख सकते। इट इज जस्ट प्रोपाइल बेंजीन। गॉट दिस? यस और नो प्लीज टेल मी। yes sir ठीक है, अभी हम आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, ठीक है। यू जस्ट नीड टू राइट व्हाट इज द पफ एंड सब्स्टिट्यूएंट एंड सो ऑन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अच्छा, बेंजीन कैन बी आल्सो शोन एज रिंग ऑफ 6 कार्बन एंड अ सर्कल इन बिटवीन। अरे देख लो भाई, दिस इज आल्सो बेंजीन गाइस, ओके, दिस इज आल्सो बेंजीन, याद रहेगा, ओके। Yes, sir. ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन हियर। अगर आपको नंबरिंग में दिक्कत हो रही है, आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख के रख दे, बस मेरे लिए उतना ही काफी होगा, ठीक है। 2 का करें, चलिए 2 का कीजिए, फिर साथ आगे हम लोग देखेंगे। पफ लिख दें आप लोग और सब्स्टिट्यूएंट लिख दें, बस इतनी मेहरबानी कर दें मेरे लिए, ठीक है। नंबरिंग हम आपके लिए संभाल देंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। नंबरिंग आई कैन डील विद इट, वो समझा देंगे आप लोग को एग्जाम्पल से। Is anyone of you following the World Cup? Is anyone following the World Cup? Cricket World Cup? yes No. sir. No. Rishita is following. Rishita, you are following या फिर सिर्फ इंडिया को फॉलो कर रहे हैं? I mean I started जब इंडिया और पाकिस्तान had a match अच्छा चल, तो वो तो भाई बेकार गेम हुआ, बिल्कुल कुछ कर ही नहीं, मतलब थोड़ा सा भी ये नहीं हुआ, अच्छा ही नहीं हुआ तो बिल्कुल interesting नहीं। नहीं बट था हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं था पाकिस्तान के जीतने का, लाइक फ्रॉम द स्टार्ट ओनली इंडिया जीत रही थी। ऐसा नहीं कि मतलब अगर बॉलिंग में भी थोड़ा सा कुछ होता तब भी मतलब मजा आता देखने में, लेकिन बॉलिंग में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, गेम ही खत्म हो गया तुरंत। खैर, बट टुडे देयर इज गोइंग टू बी अ बिग अपसेट। आज गेम हो रहा है नेदरलैंड्स एंड साउथ अफ्रीका। यू नो विच इज स्ट्रॉन्गर टीम, राइट ऋषिता? नेदरलैंड्स एंड साउथ अफ्रीका, विच इज स्ट्रॉन्ग? ऋषिता? sir I think it's South Africa हाँ, साउथ अफ्रीका इज स्ट्रॉन्गर, वेरी स्ट्रॉन्ग है ना, बट साउथ अफ्रीका इज लूजिंग, इट्स गोइंग टू लूज टुडे आई थिंक। टारगेट wow इज 240 अगेंस्ट 6 नेदरलैंड्स। हाँ, 109 एंड 6। आप लोग they यहाँ are करें, okay they have to please make 245 I think, 246 246 ना। It's over. Is in 19th of November. में टाइम लगी बहुत। फाइनल देखेंगे सबके साथ में। फाइनल ऑब्वियसली इंडिया इज देयर, इंडिया नहीं रहेगा तो क्या ही मजा है फाइनल का। इंडिया नहीं रहेगा तो अहमदाबाद स्टेडियम भी खाली रहेगा। इफ इंडिया इज नॉट इन द फाइनल, इंडिया होपफुली हो, लेकिन इंडिया हैज नॉट लॉस्ट, है ना? हाँ, इंडिया हैज नॉट लॉस्ट एनी गेम।
So far, sir. आपने क्या बोला समझ ही नहीं आया। मैं कितनी जल्दी ऑफ कर दिया आपने। So far, India hasn't So lost any game. हाँ, India hasn't lost any games so far. Yeah, correct. And hopefully देख अब न्यूजीलैंड वगैरह है थोड़ी सी स्ट्रांग, ऑस्ट्रेलिया बट ऑस्ट्रेलिया इज नॉट वेरी स्ट्रांग। ऑस्ट्रेलिया इज लाइक इन द लास्ट ऑफ पॉइंट्स टेबल। अफगानिस्तान और नेदरलैंड्स और इनके साथ में भी तो ऑस्ट्रेलिया इज नॉट वेरी स्ट्रांग टीम दिस टाइम, इवन दो दे हैव गुड प्लेयर्स। बट न्यूजीलैंड इज गोइंग टू बी अ हर्डल थोड़ा सा। इंग्लैंड नॉट सो मच आई थिंक। दो ही टीम मेन बचे हैं अभी। साउथ अफ्रीका की है। लेट्स सी व्हेन इज नेक्स्ट गेम इंडिया का। हाँ, ये सवाल हो जाए तो भी भाई प्लीज भेजें, है ना। ऐसा नहीं कि हमको बस आप लोग बातों में उलझा के रखें, है ना। सेंड मी दी एस एंड पफ वंस यू आर डन। इंडिया एंड बांग्लादेश वी हैव नेक्स्ट, एंड और किसके साथ खेल रहे हैं इंडिया। इंडिया न्यूजीलैंड इज ऑन 22nd, दैट इज गोइंग टू बी अ बिट, थोड़ा सा गेम अच्छा हो जाए। फिर इंडिया कब है, इंडिया एंड इंग्लैंड इज ऑन 29। ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हो सकता है। इंडिया एंड श्रीलंका, श्रीलंका इज नॉट वेरी स्ट्रांग दिस टाइम। श्रीलंका को क्या हराया था एशियन गेम्स में। देन एट लास्ट इंडिया साउथ अफ्रीका इज वेरी लेट। इंडिया साउथ अफ्रीका पता नहीं। I think India Netherlands is at last. Then we will have semi-finals. Okay, I think I got an answer. You should have sent. आमना, आपको ये समझ में नहीं आया क्या आमना? हाँ ठीक है। एवरीथिंग इज करेक्ट रशिता। आमना, आमना, आर यू देयर? यस, Yes, हेलो आम। हाँ, आपको समझ में नहीं आया क्या ये वाला? सेंड कर दिया। सॉरी, सेंड कर दिया। सेंड कर दिया आपने? अच्छा। पफ इज बेंजीन, ब्रोमो, नाइट्रो एंड, अरे इथाइल होगा ना, 2 कार्बन है उसमें, 3 कार्बन कैसे देख लिया आपने? ठीक है, इधर क्या है आपके पास, क्लोरो, ब्रोमो एंड फ्लोरो। आखिर ने भी भेजा है। अच्छा, ये डाई कहाँ से आ रहा था? ऋषिता का डाई नहीं लिखा ऋषिता ने। ऋषिता ने सवाल ही गलत उतार लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऋषिता, आप सवाल थोड़ा ध्यान से उतारा करें, क्वेश्चन आप गलत लिख लेती हैं। ओके, सो करेक्ट गाइस, पफ विल बी व्हाट? पफ विल बी बेंजीन, and the substituent that we have here is we have bromo, then we have this is a substituent ना, ये आपका substituent है this। कितने कार्बन है यहाँ पे आमना? ऑमनी कार्बन्स, हाँ कितने? 2 टू है तो क्या हो जाएगा बताओ? इट विल बी इथाइल ना, इथाइल। इथाइल। और दूसरा हमारे पास है क्या है? नाइट्रो। इथाइल के बाद है नाइट्रो। ठीक है, अब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। सो देयर इज ओनली 2 वे ऑफ नंबरिंग। अब देखिए, ब्रोमीन से नंबरिंग आप स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। बहुत बच्चे सोचते हैं आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को सबसे पहला प्रेफरेंस दे देते हैं कि सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर लास्ट प्रेफरेंस है नंबरिंग के केस में, है ना। प्लीज इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखें। यू हैव डन नंबरिंग आल्सो राइट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है दैट इज द लास्ट। जब कुछ नहीं हो रहा है ना, तब जाके अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाएंगे आप। तो स्टार्ट फ्रॉम द सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट आपको क्या मिलेगा? 1। There are 2 ways of numbering, है ना। You can either number it 1, 2 and 3 with the black numbers that I am having, or you can number it 1, 2 and 3. Now, ब्रोमीन को तो दोनों जगह क्या मिल रहा है? 2 नंबर मिल रहा है। सो ब्रोमीन इज नॉट गोइंग टू डिसाइड। प्लीज लिसन हियर गाइस, यहाँ पे देखें, स्क्रीन पे देखें। ब्रोमीन इज गेटिंग 2 नंबर। अब आप हम 1, 2, 3 लिख रहे हैं, आप लोग स्क्रीन पे नहीं देखें तो कैसे समझ में आएगा? ठीक है, सो ब्रोमीन इन बोथ द केसेस इज गेटिंग द 2 नंबर। सो ब्रोमीन इज नॉट गोइंग टू डिसाइड। व्हाट इज गोइंग टू डिसाइड? नाइट्रो और इथाइल में। तो नाइट्रो और इथाइल में कौन पहले आ रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? in alphabetical order which is coming first? ethyl। इथाइल। ethyl को मिलेगा कम नंबर, तो ethyl को मिलेगा 1 नंबर और नाइट्रो को मिलेगा
इथाइल को मिलेगा 1 नंबर और नाइट्रो को मिलेगा 3, ठीक है। सो दिस ब्लैक नंबरिंग विल बी प्रेफर्ड and bromo is in the second position, methyl will be in the first position, and nitro will be in the third position. Now the name will become 2 bromo 1 ethyl 3 nitro benzene. Is there any doubt, guys? Yes or no? Please tell me. किसी और कोई doubt है? Any doubt? No, Any sir. doubt? No doubts. Okay. No. इस केस में करते हैं puff is still benzene. The subsequent that we are having is chloro. We are having bromo, and we are having fluoro. अब ऑब्वियस सी बात है, द नंबरिंग विल स्टार्ट आइदर फ्रॉम हियर और हियर, है ना। आइदर क्लोरीन विल गेट 1 नंबर और ब्रोमीन विल गेट 1 नंबर। इन दोनों के केसेस में विच शुड गेट 1 नंबर, टेल मी। अच्छा, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है नंबरिंग के? आई कैन नंबर इट 1 2 3 4, ये नंबरिंग हो सकती है। लेकिन अगर बी आर से हम स्टार्ट करें, बी आर से अगर हम स्टार्ट करें तो आई एम गिविंग रेड नंबर्स 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, इन द ब्लू नंबरिंग्स, इन ब्लू नंबरिंग्स आई एम गेटिंग नंबर 1 2 एंड 4, तो सब्स्टिट्यूएंट 4 में ही खत्म हो जा रहा है। बट अगर हम ब्रोमीन को नंबर करते हैं, पहले 1 2 और फिर 5 नंबर आ रहा है, सो ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूएंट पहले कहां पे खत्म हो रहा है? ब्लू वाले में, राइट। वी आर गेटिंग द सब्स्टिट्यूएंट कंप्लीटेड इन द ब्लू वन, सो वी विल टेक दिस ब्लू केस। यहाँ पे आपके पास नंबरिंग आ जाएगी। क्लोरो के लिए हो जाएगा 1 क्लोरो, ब्रोमो के लिए हो जाएगा will be 2 bromo, and fluoro के लिए हो जाएगा 4 fluoro. So and in alphabetical order, B, C, and then F. So we'll have 2 bromo, 1 chloro, 4 fluoro, benzene. Is this clear, guys? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes. ठीक है। अब इतना टफ आपके पास जनरली आएगा नहीं, आप इसको प्लीज कॉपी कर लें। रेज योर हैंड वंस यू आर डन। अब देखिए, देर आर सर्टेन कुछ बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं विच आर स्पेशल, ठीक है। व्हाई दे आर स्पेशल? बिकॉज दे अकर टू मेनी टाइम्स इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जैसे कि आपके पास मान लीजिए, इफ यू हैव बेंजीन रिंग एंड यू हैव OH ग्रुप हियर, ठीक है, तो इसका नाम हम लोग अगर करेंगे तो विल नेम इट हाइड्रोक्सी बेंजीन, करेक्ट है ना। सिंपली हाइड्रोक्सी बेंजीन नाम होगा ना। अरे बोलो गाइस, लिखना Yes, नहीं है sir. यार, लिखना नहीं है अभी, लिखना ही नहीं है अभी। बट दिस कंपाउंड जब भी आपको दिखेगा, दिस विल बी कॉल्ड एज फेनॉल। आपको कहीं पे भी ये हाइड्रोक्सी बेंजीन नाम से नहीं दिखेगा। इवन दो if they ask you what is the IUPAC name of this, you can write phenol as well as hydroxybenzene. There is no problem in that. But when it comes in writing in different books, in your question paper, it will be referred as phenol. Now, अब ये चीजें जो है ना, लोगों ने इनकॉर्पोरेट कर लिया अपनी वोकैबुलरी में। जैसे एक को आपके पास एक कोई ना कोई स्कूल में या फिर आपके जानने में आपके घर में एक होगा जिसको सब कोई गोलू कहते हैं, है ना, जिसको सब कोई गोलू कहते हैं, लेकिन उसका नाम नहीं है गोलू, है ना। उसके नाम से उसको कोई पुकारता ही नहीं है। सब कोई क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं गोलू, है ना। होता है कि नहीं होता? बताइए गाइस। आपके और घर में होगा एक, किसी का नाम होगा राजू, है ना। किसी के घर में क्या होगा नाम? राजू। छोटू होगा किसी का नाम, है ना। बस उनको ओरिजिनल, आप उनका ओरिजिनल नाम ले लीजिए, कोई पहचान पाएगा? टेल मी गाइस, विल एनी? No, sir. ऐसा कोई नहीं है रिश्ता आपके घर में? हाँ रिश्ता, यू डोंट हैव एनी? ये भाई इंडियंस घर में ऐसा होता ही है। रिश्ता, यू डोंट हैव एनीवन इन द फैमिली, लाइक एक्सटेंडेड फैमिली? I do, sir. है ना। हाँ, तो Yes, sir. अगर आप उनके ओरिजिनल नाम से पुकार ले तो क्या कोई उनको पहचानेगा?
नहीं पहचानेगा। नहीं। तो वही बात हो जाती है, आप हाइड्रोक्सी बेंजीन लिख तो सकते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा बुलाएगा ना, आपको पता है दूसरा बुलाएगा तो फिनॉल ही बुलाएगा। सो वी हैव टू लर्न दीज नेम्स आल्सो, ठीक है। सो प्लीज राइट सम इंपॉर्टेंट बेंजीन डेरिवेटिव्स, प्लीज राइट some important benzene derivatives, some important benzene derivatives। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास when you have benzene ring और उस पे लग जाए C डबल बॉन्ड O एंड OH, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आसान नाम है, बहुत हार्ड नाम नहीं है। दिस इज बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। प्यार से क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड, है ना। सब इसको पहचानते भी किस नाम से है, बेंजोइक एसिड। द सेकेंड नंबर वी आर हैविंग बेंजीन रिंग और यहाँ पे CHO लगा दीजिए आप, तो इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है। देन वी हैव 3 नंबर, हाँ उसके बाद लिख लीजिए 3 नंबर में। Now this is a bit difficult for you right now, लेकिन क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। You have C double bond O and this C double bond O is further attached with CH3. Now we call this acetophenone, acetophenone। 4th नंबर में आप लिखिए बेंजीन रिंग, उसके ऊपर CN, दिस इज बेंजोनाइट्राइल, दिस इज बेंजोनाइट्राइल। उसके बाद आएगा आपके पास बेंजीन रिंग, 4 हो गया। 5 बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है OH, सो दिस इज फिनॉल। 6 यू हैव बेंजीन रिंग, उसके ऊपर लगा हुआ है आपके पास OCH3, OCH3 anisole। देन यू हैव एनिसोल में E आता है, बेंजीन रिंग, इस पे लगा हुआ है आपके पास NH2, दिस इज एनिलीन। 8th में आप लिख लीजिए जो कि आप लोग को बिल्कुल लास्ट है याद करने के लिए, CH3, दिस इज टोलोइन। रेज योर हैंड वंस यू आर डन राइटिंग। Rishita, Amna, guys, waiting for you. Sir, what is the sixth one? What is the 6th one? Anisole, ANISOL. Okay. Hello, Yes, is hello. this sports class or chem class? This is class 11th, Suhail. Assalamu alaikum. Okay. Walaikum assalam. Okay, so you're here for which class? Sorry, I'm here for the driving class. driving class. Yes. Okay, who gave you this link, Suhail? My goofy or dead. Sorry. Akif, please explain. Sir, Yes, what? Akif, please explain what was happening. I don't know. You know. No, really.
I found his You voice know. irritating, so I asked you to remove him. That's it. No. It's No, even before wallahi, I he's. don't know. Wallahi. Wallahi, I don't know him. Okay, fine. I saw your reaction once he entered the room. That's why I'm asking. Sir, I heard his voice. I thought he'll do something stupid. That's why I was laughing. Okay, fine. So चलो यहाँ तक इसलिए आप लोगों ने ना ठीक है चलिए now you'll write puff changes puff मतलब समझ गए ना जो हम लोग बेंजीन लिख रहे थे बेंजीन नहीं लिख के puff changes if an important benzene derivative is present ठीक है चलिए एक एग्जांपल लिख लीजिए so he's irritating now Who? there is one more I mean अब वो दूसरे नाम से आ रहा है रशीद नाम से I really want to take him in बट खैर आप लोग का थोड़ा लॉस हो जाएगा अदरवाइज वो होगा कहाँ के इंडिया का तो होगा नहीं है ना सर इंडिया का ही है ना? और नहीं मतलब वो रहता तो होगा बाहर पता नहीं. हाँ वो रहता तो होगा बाहर ही बिकॉज दीज लिंक्स आर नेवर शेयर्ड हियर इन इंडिया ठीक है सो कैन यू सी देयर इज अ न्यू पफ यस और नो प्लीज टेल मी Yes, sir. सो व्हाट विल बी द पफ टेल मी गाइस Benzenyl बाकी लोग बताएं आमना अर्जिता व्हाट विल बी द पफ नाउ वी हैव बेंजीन रिंग Benzene like. yeah correct this is my puff now correct so the puff will be benzaldehyde रशिता नो प्रॉब्लम ना No, sir. ओके अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट क्या आ जाएंगे आपके पास इट विल बी ब्रोमो एंड इट विल बी नाइट्रो ठीक है सो नाउ आई कैन नंबर इट इन टू डिफरेंट वेज आई कैन नंबर इट आइदर द ब्लू वे प्लीज सी हियर गाइस अब लिखने में मत लग जाओ यार तुम लोग 1 2 3 4 5 and 6 right and the other way I can number is the red one that I'm writing so it will always start with the CHO okay so that important benzene derivative जिसकी वजह से we are writing puff ना we are writing puff because of CHO so it will always start with that ठीक है उसको ध्यान में रखिएगा आपको so it will be either one now it is Suleiman oh my god इतने बच्चे आ जाए मेरे क्लास में तो क्या ही बात है ना 1 2 3 3 4 5 and 6 ठीक है 1 2 3 4 5 and 6 okay now we have a choice here right we have a choice कि अच्छा I will ignore this 2 6 वाले को हम छोड़ देते हैं यहाँ पे 2 6 वाले को छोड़ देते हैं और इस 4 को भी हटा देते हैं ठीक है now ब्रोमो इज आइदर ब्रोमो को प्रेफर करेंगे ना ब्रोमो को प्रेफर करने वाले बिकॉज दोनों की केस में इन द ब्लैक वन ऑल्सो आई एम गेटिंग सब्स्टिट्यूट 1 के बाद 3 में मिल रहा है उसके बाद 5 में अगर हम ब्लू को भी देखें तो 1 के बाद 5 में मिल रहा है फिर 3 में मिल रहा है राइट सो वी आर गेटिंग द सेम नंबर्स नाउ वी हैव अ चॉइस कि बीआर को पहले दें या फिर नाइट्रो को सो ऑब्वियसली वी हैव टू गिव प्रायोरिटी टू बीआर बिकॉज अल्फाबेटिकल ऑर्डर सब कुछ इक्वल आ चुका था दैट इज व्हाई आई एम गिविंग प्रायोरिटी टू बीआर ओके सो बीआर विल बी 3 ब्रोमो नाउ इट इज अच्छा खोदेजा बशीर oh okay now I don't know what should I do Khadija Bashir is part of our class let me see Sir, you can like tell them to join one by one, right? Also, you can add one by one.
Chicken head one. खुदेजा ऐसे so खुदेजा never speaks. वो अगर खुदेजा अगर बोलने लगी तो खुदेजा नहीं है ना. अस्सलाम वालेकुम खुदेजा. Is it the driving class? My goofy ordered. Oh, Dad smacked me in the No, back of the let head us. with a steering wheel. I pushed my Oh. grandpa into oncoming traffic because he changed the channel to Family Feud. Deep down. Now he will learn organic chemistry because guys, Aki, can you please try turning your, okay, he's sparing the chat now. Okay, fine, not a problem. You cannot chat now. Okay, I hope they learn organic chemistry. Welcome to organic chemistry. Okay, fine, not a problem. That also. Yeah. Okay, now I have no choice. I have no choice other than to remove him. Now there's another Khadija Bashir. Now just give me a second. We have okay, fine. Amna, okay. Yes, sir. Amna is here. Akib, Present. Akib is. Rishita, Yes, sir. okay. ये कोई नहीं, थोड़ा हम लोग का एंजॉयमेंट हो गया, आगे बढ़े हम लोग वापस से. Can we Yes, move sir. forward, right? Okay, चलिए ठीक है. So we have 3 bromo and nitro will be in the 5th. ठीक है? 5 nitro. Create shared contents? No. Unmute themselves. Chat. Rename themselves? No. Share screen? No. Share whiteboards? No. Share notes? No. Collaborate with Zoom? No. Set meeting timers? Can I guess? I don't know. Yeah, that's the only options I can get. Okay, fine. So now the name will be 3 bromo, 5 nitro. It will be benzaldehyde. ठीक है? All of you got this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. ऋषिता डर गई. हाँ ऋषिता. I thought it was some internet troll, sir. It's fine, but I mean the thing is, the good thing is that I mean they cannot see your videos on, है ना? Even if they now if Khudeja Bashir है ना, again I don't know what Khudeja. I think she is Khudeja. I don't know. Let us try admitting once again, है ना? Let us see what happens. They can chat. They cannot chat now. Let us see. Sir, Mike. Okay, put Mike and let us see. No, Mike I will turn on because Khudeja never speaks. Assalamu alaikum, Khudeja. Walaikum assalam, sir. Okay, fine. This is Khudeja. Okay. Khudeja, you spoke after a very long time. पता है आपके नाम पे एक ट्रोल आ चुका था क्लास में when you went out. Khudeja, am I audible? Yes, sir. Yeah. Okay. So which chapter is going on? Tell me, Khudeja. ये तो हमको विश्वास नहीं हो रहा. Khudeja है. Khudeja, you never speak. आज आप वो बात कर रही हैं. Are you troll or are you Khudeja? Sir, I'm Khudeja only. Here Khudeja only. How? कैसे हम मान ले? हम कैसे मान ले? Studying organic chemistry. We are About studying benzene organic. derivative. Okay. Benzene derivative and पूरे टॉपिक का क्या नाम है? जितने क्लासेस हम लोग पढ़ते आ रहे हैं. Yes, Khudeja. Yes, sir.
व्हाट इज द टॉपिक्स नेम पूरा, जो बेंजीन वाला तो पढ़ रहे हैं तो अभी देख लिया आपने। IUPAC, right? चलिए ठीक है तो कोई केमिस्ट्री का ही बच्चा आपको दे जाए। आई डोंट नो वेयर शी इज माय स्टूडेंट, वेदर शी इज माय स्टूडेंट और नॉट। हमने तो पहले कभी आपकी आवाज भी नहीं सुनी है ना, आज आप बोल रहे हैं तो पता नहीं। खैर जो भी है आप, वेलकम टू द क्लास। ओके चलिए खैर। And now there is another important part here. I hope you have written this down. And we have. So why Khudeja, आज क्या हुआ जो आज आप माइक ऑन करके you kept talking? Otherwise हम तो बोल बोल कैसे थक जाते थे बिल्कुल, फिर भी आप कुछ माइक नहीं ऑन करते थे। My mic would not work before, but now it's working. अच्छा, your mic was not working. So you can tell me on the chat also ना कि sir my mic is. अरे तो आप you used to say in the chat, but you used to send it to Learnivio, I think. Yeah, sir. अरे भाई Learnivio हम थोड़ी ना, तो सालिम है ना, तो Learnivio को भेज रहे हैं आप मैसेज। चलिए गाइस प्लीज हियर, नेमिंग ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मतलब बेंजीन में हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट विल बी देयर, टेल मी गाइस। डाई सब्स्टिट्यूएंट मींस हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट इन द बेंजीन रिंग? 2. 2 substituent, very good. Now this is a relative, and this will be only applicable, this type of naming will only be applicable when we have 2 substituent, when we have 2 substituent, ठीक है। So let us suppose we have a benzene ring like this. वो ट्रोल लेकिन था भाई, मतलब अच्छा था, उसने मतलब एक रिकॉग्नाइज कर लिया कि खुदेजा नाम से एक है कोई, और फिर वो पता है खुदेजा he came with your name, बट उसने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, ऐसे KHUDEEJ कर दिया था उन्होंने, तो इतना याद नहीं रहा, तो हमको लग रहा था ये वही मतलब ट्रोल है, बट फिर भी आई लेट हिम इन, देखते क्या होता है। उसका ड्राइविंग क्लास चलाना सिखाते उसको हम। चलिए है। So let us suppose we have a group attached here. Now there are only certain possibilities that if you have one group on the benzene ring, उसके बाद कुछ ही possibilities बचती हैं दूसरे substituent के लिए। So you either have this possibility कि यहाँ पे लग जाए, चाहे यहाँ पे, both of these positions are same positions. Can all of you see that? Yes or no? Please tell me. Correct है guys? Both these red ones are same positions ना? अरे बोलो भाई। Yes na? Okay. Similarly, both these blue ones are same. Correct? Yeah. And then we have this green one. ये green one अपना अकेला है, ठीक है। अब ये ईजान कोई आ रहा है यार, हम ये चलो देखते हैं क्या ही है। ये मेरे लिए हो गया एडवेंचर, है ना। कुछ नहीं बोल रहे बच्चा, हाँ ये ईजान ही है फिर तो। चलिए, so this red one here, this position, okay, this position is known as ortho. बट आप ना इस पोजीशन को दिल पे मत लगाइएगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थो, यू विल रिमेंबर दैट, ओके, रिमेंबर दैट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थो? व्हेन टू ग्रुप्स, अगर इफ देयर इज सम ग्रुप अटैच्ड है ना, तो उसको बोलेंगे कि वो ऑर्थो पोजीशन में लगा हुआ है। तो कैसे बोलेंगे? व्हेन टू ग्रुप्स आर अटैच्ड एंड देयर इज नो कार्बन इन बिटवीन, नो कार्बन इन बिटवीन ग्रुप्स। बात समझ में आई? ठीक है, एक आपके पास यहां पे है एक ग्रुप लगा हुआ और दूसरा ग्रुप यहां पे लगा हुआ है। So when the groups are attached in such a way that there is no carbon in between, तो ऐसे ग्रुप्स को बोलते हैं that they are in the ortho position. Is that clear? Yes or no? Please tell me. आप इस पोजीशन को नहीं देखेंगे, आप इस डेफिनेशन नो कार्बन इन बिटवीन द ग्रुप्स देखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वी हैव मेटा। What is meta? Meta, when we have one carbon in between groups, one carbon in between groups. One carbon in between groups, and then we have the green one, which is known as para. Para का मतलब होता है there are 2 carbons in between groups. ठीक है। Rishita, this is ortho, meta और para.
Yes, Rishita, this is ortho, meta or para. Or ortho. ये क्या क्या हम क्या समझाएं हम इसमें? डाई सब्स्टिट्यूएंट के लिए होता है ना भाई ऑर्थो, मेटा और पैरा। एक में कहां से ऑर्थो, मेटा, पैरा होगा? कुछ नहीं होगा। क्या बोलेंगे आप? बात समझ में आई? Yes, sir. हाँ ठीक है, तो वही हम बोल रहे हैं, दिल पे नहीं लगाने के लिए, उस पोजीशन को दिल पे मत लगाइए। कीप इन माइंड द डेफिनेशन दैट वी आर हैविंग, ठीक है? सो ग्रुप्स तो रहने जरूरी, यू शुड हैव टू ग्रुप्स, तभी यू विल यूज ऑर्थो, मेटा और पैरा। व्हाट अबाउट हियर? टेल मी नाउ, दिस इज ऑर्थो, मेटा और पैरा। बोले ऑर्थो, मेटा और पैरा। No carbon in between them, so ortho. वेरी गुड, करेक्ट। इवन दो इट इज नॉट लुकिंग एट एज ऑर्थो ना, ठीक है? तो नजरों का धोखे से बचना है आपको। सो दिस विल बी ऑर्थो, ओके? ऑर्थो। तो इसका नाम हम ऐसे लिखते हैं, वी विल राइट, सी फ्लोरो है और ब्रोमो है, सो ऑब्वियसली ब्रोमो विल कम फर्स्ट, विल राइट ओ ऑर्थो के लिए, ब्रोमो फ्लोरो बेंजीन। बात समझ में आई? बात समझ में आई? Yes, sir. ओ ब्रोम, ठीक है, उसी तरह से चलिए। आप लोगों ने लिख लिया ये ऑर्थो, मेटा, पैरा? एनीवन स्टिल राइटिंग? इफ समवन स्टिल राइटिंग प्लीज लेट मी नो। चलिए हम यही बन सकते हैं। We have देखिए, now can you see a benzene derivative? Can you see a benzene derivative? Yes, sir. कौन सा benzene derivative बताएं? What is this Me? Me क्या होता है? Any idea what is Me? No. Me is methyl, ठीक है? Me methyl होता है, CH3, ठीक है? कभी कभी Yes. in order CH3 को Me लिख देते हैं, ठीक है? So can you see a benzene derivative? Important benzene derivative. Yeah, CH. टोलोइन ना? क्या बोला आपने? टोलोइन? Toluene, yes, sir. टोलोइन होगा ना? So this whole thing is toluene. This whole thing is toluene. और नाइट्रो जो लगा हुआ है कौन से पोजीशन पे लगा हुआ है? ऑर्थो, मेटा और पैरा। विथ रिगार्ड टू Me और नाइट्रो क्या रिलेशन है उनका? ऑर्थो, मेटा या पैरा? Or meta. Para. पैरा, दो कार्बन इन बिटवीन ना, तो इट विल बी पी नाइट्रो टोलोइन। बात समझ में आ रही है? अरे Yes, बोलो sir. भाई। ठीक है, एक और लास्ट केस देख लीजिए आप। Now here we have two bromines, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? And they are in which position? Tell me, ऑर्थो, मेटा और पैरा। क्या है इनके बीच में कहानी? ऑर्थो है, मेटा है, पैरा है? Meta. मेटा। तो इसको बोलेंगे M, and now we have two bromines, तो डाइब्रोमो बेंजीन। Got this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए इन तीनों को तो लिखिए, but I am giving you one. Write the name of these two.
जी, yes, Ankit, very good, correct. आमना जल्दी भेजें। नहीं नहीं यार, पफ तो एनिलीन हो जाएगा ना ऋषिता, उल्टा कर दिया आपने। पफ हो जाएगा ना एनिलीन, और ब्रोमो हो जाएगा उसके एम में। हाँ ऋषिता, फर्स्ट वन। Yeah. Yes, sir. हाँ, वो पफ पफ करके करो भाई, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। ओहो, आमना माइक ऑन करे फिर तो। आमना, टर्न योर माइक ऑन। Yes, sir. Can you see any benzene derivative, important benzene derivative in this structure? NH2. NH2 लगा हुआ है, तो बेंजीन और NH2 को अगर हम मिला दें, tell me what will be this compound? Aniline, तो पफ क्या हो जाएगा? Aniline. Aniline benzene. हाँ, और Br substituent है ब्रोमो, Yes, sir. so what will be the position of Br? ऑर्थो, मेटा और पैरा, कितने कार्बन है इन दोनों के बीच में? How many carbons in between, tell me? Between NH2 and Br. हाँ, 3. नहीं नहीं नहीं, मतलब NH2 जिस कार्बन पे लगा हुआ, Br जिस कार्बन पे लगा हुआ, उन दोनों के बीच में, ऐसे One. मतलब इन दोनों के बीच में। हाँ, तो कौन सा हो जाएगा? ऑर्थो, मेटा और पैरा, एक कार्बन रहता है बीच में, तो क्या बोलते हैं? Meta. तो इट विल बी एम ब्रोमो। आ गया समझ में? Yes, sir. अगला वाला बताइए, व्हाट विल बी द पफ? COOH. हाँ, सो पफ COH नहीं हो जाएगा ना, पफ तो कुछ और होगा ना, व्हाट विल बी द? हाँ Xenol बताएं। acid. हाँ, Then benzoic बेंजोइक, acid. हाँ बेंजोइक एसिड, ठीक है। फिर उसके बाद Br बचा। Yes. Br का पोजीशन क्या बोलेंगे? कितने कार्बन है दोनों के बीच में? हाउ मेनी कार्बन बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन? 0. तो क्या होता है जब जीरो कार्बन होता है तो? Ortho. ऑर्थो के लिए क्या लिखते हैं? ओ लिखते हैं, एम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ओ ना, O. ओ ब्रोमो, नाम हो जाएगा क्या? ओ ब्रोमो बेंजोइक एसिड, सही है? Yes, sir. ठीक है। आफ्टर दिस गाइस प्लीज राइट अदर। छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, नॉन कन्वेंशनल कंपाउंड्स, ठीक है? ये समझ में आ गया ना सबको कैसे करना है? ऑल ऑफ यू गॉट दिस? यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. राइट देन नॉन कन्वेंशनल कंपाउंड्स। ठीक है, सही है। ये नॉन कन्वेंशनल कंपाउंड्स, खदीजा आपका लेकिन ना आंसर्स नहीं आ रहा है। यस खदीजा,
Khadija, sorry, my bad. Khadija, I'm not getting your answers. See here. If you see in this type of compounds, in this compound, यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है that CHO is my functional group. But if you are going to take any parent chain, ना आपके पास ये terminal carbon है. We have 3 terminal carbons. We have 3 terminal carbons A, B, and C. Now you can go from A to B or A to C या फिर B to C या C, है ना, कुछ तो जा सकते हैं. No matter what path you take, आपका एक ना एक functional group मिस हो जाएगा. There is no parent chain available which can compensate, which can have in it all the 3 CHO groups. Correct है guys? Yes or no? Please tell me. है ना? कहीं से भी नहीं हो पाएगा. Right? So in that case, in these cases, what do we do? हम क्या करते हैं? We take all of these CHO as individual. In CHO को लेते हैं. And we write that the functional group is, now since we are also taking the carbon atom, ना इस carbon atom को हम functional group के अंदर ले रहे हैं, we are not going to count it in the parent chain. इनको parent chain में count नहीं करेंगे. That is why we call it, try तो आ जाएगा carbaldehyde. So carbaldehyde, okay. Unsaturation is nothing, so it will be obviously nothing. तो इसके लिए N आ जाएगा. Now the parent chain is the remaining part. Parent chain is the remaining part, जिसमें आपके पास कितने कार्बन आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4. Now it is starting with tries, obviously it will be pentane. N आ जाएगा यहाँ पे. It is having 5 carbon, तो इसको बोल देंगे pent. Now the name for this compound will be pentane 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 5 tricarbaldehyde. So this is different from the usual naming. Can you see that? Yes or no? Please tell me. थोड़ा कंपाउंड ही नॉन कन्वेंशनल है ना, नॉट द यूजुअल कंपाउंड. इसकी नेमिंग थोड़ी सी अलग है. ऑब्वियसली ये अगर आ जाए आपके पास एग्जाम में तो फिर ऐसे करना है, आपको बहुत ज्यादा इसको याद रखने की जरूरत नहीं है. हाँ, बैक ऑफ द हेड ऐसा कुछ आ जाए तो ना, हाँ ऐसा कुछ होता तो है, इसका कुछ अलग नाम होता है, इतना आपके लिए काफी है. दिस विल बी मेनली यूज्ड इन द 12th स्टैंडर्ड. एक बार सवाल आ गया था बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है. सिमिलरली इफ यू हैव, लेट अस सपोज कुछ इस तरह से, यू हैव 3 कंपाउंड्स ऐसे, COOH, COOH, और यहाँ पे भी आपके पास COOH. Now in this case 1, 2, 3, so functional group is going to be not oic acid, it will be carboxylic acid. Tricarboxylic acid. ठीक है, तो unsaturation तो कुछ नहीं है, तो आपके पास A and E because tri is there, and parent will be, we have 3 carbon atoms here, 1, 2, and 3, so it will be prop 3 carbons, तो prop हो जाएगा. Now we can write propane 1, 2, 3 tricarboxylic acid. ठीक है. उसी तरह से there is one more compound आपके पास, you have cyclic ring, और यहाँ पे आपके पास आगे मान लीजिए CHO and CHO. ठीक है, so it will be now, दो आपके पास CHO है, and then you have cyclopentane ring, so you will write cyclopentane, then you write 1, 2 carbaldehyde. After that you are going to write trivial or common names. Okay, guys, please see.
ट्रिवियल कॉमन नेम्स यू हैव टू मेनली टॉक अबाउट टू कंपाउंड्स, एक तो आपके पास कीटोन है और दूसरा है ईथर्स के बारे में. सो व्हाट इज ईथर? ईथर आपने नहीं सुना, कीटोन तो सुना है आपने. ईथर यू मे नॉट हैव हर्ड. व्हाट इज ईथर? व्हेन यू हैव Sir, ROR. Yeah, sure. Please write this down. done, sir. So ether is ROR, है ना? R is any alkyl group bridging with oxygen and then alkyne. So you may know that the example, for example, you have O and here you have CH3. Okay. So in this, obviously, functional group is nothing. So we'll write E. Unsaturation is nothing. So we'll write AN. You'll write AN. And after that, we'll talk about the parent. So parent आपके पास दो ही सकते हैं. It will be one carbon वाला या दो carbon वाला. So obviously दो carbon वाला. So it will be two carbons. It will be eth, right? And then the substituent, then this OCH3 is a substituent. So this will be methoxy. OCH3 is methoxy. इसका IUPAC name जो होगा, the IUPAC name for this particular compound is methoxy ethane. ठीक है? But there is a simpler way of naming it, है ना? There is a simpler way of naming it. What it is? Please see. This group is methyl. This group is ethyl. And because there is a oxygen atom in between, ये कंपाउंड को क्या बोलते हैं? ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं ईथर. तो नाम इन्होंने बोल दिया इथाइल मिथाइल ईथर. All of you got this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है यहाँ पे. ध्यान से देखने वाली बात है. अगर आपने लिखना चालू कर दिया तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा. ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन. प्लीज सी हियर. दिस ग्रुप इज व्हाट? टेल मी गाइस, ये ग्रुप क्या है? व्हाट इज दिस ग्रुप? अरे बोलो भाई. Ethyl. इथाइल. वेरी गुड. और ये ग्रुप क्या है? Methyl. मिथाइल नहीं, इथाइल है ये भी. I ये भी तो इथाइल है. और दो Yes, इथाइल आ sir. गए तो आपके पास क्या हो जाएगा? डाई इथाइल ईथर. डाई इथाइल ईथर. ईथर क्योंकि इस कंपाउंड को, क्लास को ईथर बोलते हैं. जैसे OH आ गया तो अल्कोहल बोलते हैं ना, वैसे ये आ गया तो क्या बोलते हैं? बीच में ऑक्सीजन आ गया तो ईथर बोलते हैं. गॉट इट? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस. yes, sir. Yes, sir. छापो.
Done. Just give me a second. ठीक है, लास्ट आपका कीटोन वाला केस आ जाएगा. Same thing happens in ketone. What is this group? Tell me, guys. What is this Ethyl. group? Ethyl. Ethyl. What is this group? Methyl. Methyl. What is this whole compound known as ketones? है ना? पूरे कंपाउंड क्या बोलते हैं? कीटोन. ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा? इथाइल methyl ketone. Got this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. क्या किसी को कोई परेशानी? No, sir. Okay. What will be the name of this one? Tell me then. Common name. Sir, diethane ketone. Very good. Dimethyl. Bromine? Dimethyl. क्या बोल रहे ऋषिता? साफ साफ बोलिए. ब्रोमीन सुनाई दे रहा है हमको. No, diethyl ketone. Very good. Diethyl ketone. Correct. Okay, so that's it for today. And can someone see if there is any test assessment, any assessment activated in your app?